However, before we go into programming colors with CSS, first we have to understand how colors are made. Hue is a single value that represents color, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें brightness और luminance भी हो. So hue is the pure color of something, a single value. Hue degrees में measure होता है. There are many ways to represent hue. My favorite representation of hue is a color wheel. क्योंकि कलर व्हील में एक सर्कुलर फॉर्म में कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक पॉइंट पर एंड होता है. जब ह्यू को कलर व्हील में डिस्प्ले करते हैं तो ये एक सर्कल में नजर आता है. सो द व्हील दैट रिप्रेजेंट्स ह्यू मोस्ट एक्यूरेटली स्टार्ट्स विद रेड एट द टॉप, means 0 degrees, green at 120 degrees and blue at 240 degrees. This gives us the part of the circle that includes red, blue and green, the RGB. तो ये सर्कल RGB सीक्वेंस को फॉलो करता है. कलर व्हील और ह्यू साइंस फॉलो करते हैं. ह्यू follows the science of light or the color of light, which is all linked to the frequency of the light. The lowest frequency of light is red. जैसे जैसे frequency increase होती है, red becomes orange and then yellow, green and blue. Technically, magenta color exist ही नहीं करता because it's not a frequency of light. लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं because our mind can see that color. So it's included in the color wheel. So after blue we have purple and magenta and then back to red. क्योंकि ह्यू साइंस फॉलो करता है, सारे कलर्स रेनबो में नजर आते हैं और हर रेनबो सेम होता है. हमेशा स्टार्ट रेड से होता है और रेड हमेशा टॉप पर होता है. इसीलिए ये वाला कलर व्हील हम यूज़ करते हैं जिसमें रेड टॉप पर होता है. ऑल्सो यू विल नेवर सी द कलर पिंक इन एनी रेनबो, प्रूविंग दैट पिंक डजंट रियली एग्जिस्ट. इट्स प्योरली अ फिक्शनल कलर मेड बाय आवर माइंड्स. RGB follows hue. It goes as the angle increases to RGB. It's the same with CMYK, where K is the shortcut, so we can remove it. We are left with CMY. CMY is the same as our RGB color wheel, just flipped around. तो अब starting point टॉप से नहीं बल्कि बॉटम से है, जहां सियान है. तो अब क्योंकि व्हील को फ्लिप कर दिया है हमने, अब हम स्टार्ट बॉटम से करेंगे जहां सियान है, फिर मैजेंटा आता है और उसके बाद येलो आता है. सो दिस फॉलोज द सेम ऑर्डर एज RGB, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सो इफ यू लुक एट द ऑपोजिट ऑफ कलर्स और वर्क विद कलर कॉन्ट्रास्ट, and if you want to make images in Photoshop pop a bit, you need color contrast. To do color contrasting properly, you need the exact opposite of a certain color. If you use the hue color wheel to get the opposite of a color, it makes a lot of sense. For example, the opposite of red is cyan. Add the opposite of the wheel. The opposite of yellow is blue. At the opposite end of the wheel. So this way it's very easy to find the opposite of a color. Simply find the color on the wheel and look at exactly the opposite end of the wheel to find the opposite color. By using opposite colors and creating color contrast, you can create interesting images that pop out of the screen and grabs your attention. So normally color wheels are represented using degrees, with 0 degrees at the top, and then there are angles that are measured in degrees that represent colors on the wheel.
a circle can be split into 4 segments, starting from 0 degrees at the top to 90 degrees to 180 degrees to 270 degrees and back to the top at 360 degrees. ये सिस्टम बिल्कुल ठीक चलता है जब ट्रेडिशनल कलर व्हील यूज़ कर रहे हों, लेकिन जब हम कंप्यूटराइज करते हैं या डिजिटल फॉर्मेट में यूज़ करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आता है. So the most convenient way to save these values digitally is in a byte, which is almost exactly the right size we need. लेकिन एक बाइट जिसमें 8 बिट्स होते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा कम पड़ जाता है. हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम 360 को 1 बाइट पे सेव करें. सो अ बाइट गोज़ फ्रॉम 0 to 255. एक बाइट में सिर्फ इतनी रेंज ही कवर हो सकती है. रेंज बढ़ाने के लिए हम और बाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2 बाइट्स यूज़ करें तो हम 0 से 255 तक कवर कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 बाइट्स वी कंडेंस द कलर व्हील टू फिट इन 1 बाइट विद इन द 0 to 255 range. However, 255 is not a number that's easily divisible. हम एक नंबर चाहिए, मीन्स हमें एक ही नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड हो सके, which represents our main colors RGB. So instead of using 255 we use 240. This way we can divide it into 3 and get a main color at every interval of 80. So this way we can easily calculate the main color as well as the in between colors. For example, red is 0, green is 80 and blue is 160. If we increment by 40 we can get all the main colors. For example, red is 0, yellow is 40, green is 80, cyan is 120, blue is 160, magenta is 200, and we can complete the circle with red again at 250. This is why we have some models that work from 0 to 240 and some work from 0 to 360. The 0 to 360 model are the traditional models, while 0 to 240 model is used for programming and computers. तो ये hue के basics हैं. याद रखें, hue is a single value that represents a color. This value does not contain brightness or saturation. It represents purely the color, also referred to in science as the chroma of that color. is वैल्यू को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं. अगर ट्रेडिशनल है तो 0 to 360 डिग्रीज के दरमियान होती है, और अगर डिजिटल मॉडल है तो ये 0 to 240 डिग्रीज के दरमियान होती है. अब रिव्यू करते हैं. ट्रेडिशनल मॉडल में हर 120 डिग्री पे एक कलर आता है, और अगर डिजिटल मॉडल है तो हर 80 पॉइंट्स पर एक मेन कलर आता है. You can either be using Photoshop or using programming languages to develop software. Either way, you can use hue if you understand it properly. Hue, saturation, and brightness can help you to pick a certain color, especially if you know what color it should be. For example, if you know that it should be green or halfway between green and blue or any other color in your imagination. In Photoshop you can use your color picker and you will see that there are 3 values that are displayed, the HSB representing hue, saturation and brightness. The hue is determined by the slider here. So as we move the slider up and down, the only thing that changes is the hue. As you can see here, this is the true color with 100% saturation and brightness. The slider is upside down,
with 0 degrees at the bottom, and as you move up the degree increases. Basically an upside down rainbow. Every 120 degrees we have a primary color. So at 0 we have red, at 120 we have a full green, at 240 we have a full blue. This is our RGB. We can also get to the in-between colors, the CMY, cyan, magenta, yellow colors, which are the opposite of the RGB colors. So instead of starting at 0, we start at 180 with C, which stands for cyan. At 300 we have M, which stands for magenta, and if we add 120 degrees to this, we will end up at 60 degrees again, because we start the counter again at 360, which is Y, yellow. So if we start at 0, every 60 degrees we will either get a main color, RGB, or an auxiliary color, CMY. So every 60 degrees you would hit either red, yellow, green, cyan, blue, etc. Saturation. The horizontal space, how far left or right the color picker is, represents the saturation. On the extreme left hand, the value of the saturation is 0, which represents the color gray. If your saturation is on the extreme right, the value is 100, which represents the true color. In this case, we have a true blue color. So you can see the saturation is a gradient between your true color and gray. The last thing is the brightness. The vertical space, how far up or down the color picker is, represents the brightness. So if you go up and down, you will see that only the brightness will change. Nothing else will change. The brightness is a scale between the true color and black. Saturation is between the color and gray, and the brightness is between the color and black. You can also change it here and get different representations. So if you choose S for saturation, you will see this scale here is the saturation. The left and right is the hue, and the up and down is the brightness. If you are manipulating an image, meaning you already have an image and you just want to manipulate it or adjust it, we usually use HSL, which stands for hue, saturation and lightness, because you are adjusting something that already exists. So here is an example for how you can use hue for programming, just to save space by saving less images, and instead of using multiple images, using existing images and use changes to the hue on the image
to create more images. So in this example, we have a dot that is used on a web application. The dot shows the location of a vehicle. This dot has a lot of shades, but if you look at the hue value of each pixel, the values you can see here are as close to 0 as possible. Remember that 360 is technically 0. So as we move the color picker around the dot and we look here, all the hues are very close to 0 or 360. So the hue everywhere is red and the black is 0. So we don't have any other hue values in this image except for red. As soon as we load this image into a web app, we use special CSS filters to change the hue in this image. This means we can create different colored dots as long as we use the same hue throughout the image. When we create the image, it's easy to change the image. So you can see that simply by adjusting it here. I can change this dot to any color dot I want. I can make the dot cyan, green, yellow, orange, red, magenta, purple, blue, etc. So instead of creating or loading the same image multiple times for different colors, you can simply change the hue of the image and only have to load the image once. So our app uses less memory and bandwidth, and it's also a lot easier to develop as well. Every color on a computer screen is created by mixing amount of red, green and blue. Computer monitors are made up of thousands of tiny squares called pixels. So there are three ways to specify colors in CSS: RGB values, hex code and color names. Color. The color property allows you to specify the color of text in CSS. तो तीन तरीकों से आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं. या तो आप कलर नेम देंगे, या आप RGB वैल्यू देंगे, या आप हेक्स कोड देंगे. So there are 147 pre-defined color names जो कि आपका ब्राउज़र पहचानता है. तो आप 147 कलर के नाम हैं जो कि आप सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कॉलन देंगे और वो कलर का नाम दे देंगे. तो हमने देखा है तीन तरीके हैं कलर स्पेसिफाई करने के. फर्स्ट है या तो आप कलर नेम दे दें, कलर कैन बी स्पेसिफाइड एज एन वैल्यू दे दें जो कि 0 से 255 के दरमियान उसकी रेंज है. और थर्ड यूजिंग दिस हेक्साडेसिमल कोड RGB. तो हेक्साडेसिमल उसके बाद पेरेंथेसिस में आपने डिजिट रेड होता है, ग्रीन और ब्लू दिया. तो अब इसमें क्या है कि आप एन RGB कलर वैल्यू और उसके बाद स्पेसिफाइड विद RGB, red, green, blue or BB. 6 values होती हैं. Each parameter two values defines the intensity of the color. As second integer, 2 values हैं आपके green और 0 and जो है आपके 255. अब
तो ये याद इसमें रखिएगा क्या है, हेक्साडेसिमल इंटीजर जो होते भी हैं नंबर है 0 से 0 255 के दरमियान 9 वो कलर की A इंटेंसिटी to बताता है। सो एन RGB अब इस तरह से आप कलर की इंटेंसिटी बता सकते हैं। रेड फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं चाहती हूँ रेड कलर डिस्प्ले करना, तो मैं क्या करूंगी, इंटेंसिटी ऑफ द जैसे कलर। अभी हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट टू वैल्यूज जो हैं वो रेड रिप्रेजेंट करती हैं, एंड तो उन दोनों को मैंने 255 एफ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट RGB बाकी 00 जो 4 255 वैल्यूज हैं उनको 0 कर दिया। ब्लू रेंडर करेगा। बाद वाले दो रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ग्रीन, the blue parameter is दो set रिप्रेजेंट करते हैं to blue। its highest तो हमने value फर्स्ट 255 टू वैल्यूज and को the add others किया, are यानी set कि to हाईएस्ट, तो उसने 0 सिर्फ रेड डिस्प्ले सिंपल किया। है। इसी तरह हम से ये sentence अगर मैं देखें, हेक्स कोड देती हूँ RGB ग्रीन के लिए 0 0 तो उसमें भी क्या होगा, 255 मैंने दिया। फर्स्ट टू वैल्यूज मैंने क्या की, किया है, लास्ट टू दोनों वैल्यूज पैरामीटर जो की थे और जो दरमियान में दो वैल्यूज दोनों को मैंने मैंने हाईएस्ट कर दिया, यानी कि और रेंज क्या है 0 से तो वो 255 के दरमियान, green यानी कि display कर हाईएस्ट देगा। है 255। अगर मैंने और blue last, display करना यानी है, कि तो जो मैं ब्लू वही वाला तरीका है पैरामीटर था उसको मैंने 255 कि दिया। यहाँ पर आप तो वो जो कलर रेंडर ने करेगा हैशटैग दिया वो और फिर ब्लू होगा। इसी पहली तरह से दो वैल्यू को अगर 0 कर दिया, मैंने रेड कलर दिखाना दूसरी है, दो तो मैं वैल्यू क्या को करूंगी, आपने 0 कर दिया। फर्स्ट पैरामीटर यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू जो दोनों है वो मैंने आपने क्या किया, 255 की उसका और मैक्सिमम second दे और दिया, third यानी को कि 0 कर F। दिया। तो मैंने वो क्या डिस्प्ले क्या करेगा कि फर्स्ट जो हाईएस्ट है यानी कि blue जो रेड display है करेगा, क्योंकि उसको F उसका कर दिया, बाकी दोनों highest को है। 0 और किया, बाकी तो जो शुरू वो के कलर दो थे वो हमने रेड डिस्प्ले दोनों को 0 इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को 0 कर दूं, थर्ड वैल्यू को 0 कर दूं और जो मिडिल वैल्यू है, तो हमने देखा कि 3 तरीके हैं कलर तो स्पेसिफाई करने के। फर्स्ट या तो आप कलर नेम नेम दे दे दें सिंपली, या आप RGB वैल्यू दे दें जो कि 0 से 255 के दरमियान उसकी रेंज है। और थर्ड तो हमने देखा कि हेक्साडेसिमल कोड, आप रेड किस तो तरह डिस्प्ले करें, ब्लू किस तरह डिस्प्ले करें और ग्रीन कैसे डिस्प्ले करें। कोड अच्छा, अगर अब मैं चाहूँ कि ब्लैक तो दिखाऊं, अब उसमें क्या मैं क्या करूंगी कि जितने भी पैरामीटर्स हैशटैग पहले देते हैं तीनों और उसके पैरामीटर्स बाद मैंने क्या किया, RGB दिया RR और तीनों को 0 कर दिया और BB 6 वैल्यूज तीनों को 0 करेंगे तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, फिर वो है वही रेड आप ब्लैक डिस्प्ले करेगा। सेकंड 2 वैल्यूज अगर मैं चाहती हूँ कि व्हाइट डिस्प्ले करे जो है तो मैं क्या करूंगी, वो है ब्लू। तीनों पैरामीटर्स को। अब जो इसमें क्या है, हेक्साडेसिमल हाईएस्ट वैल्यू है यानी कि 255, तो मैंने तीनों to 9 पैरामीटर्स को 255 कर दिया, तो वो क्या A to करेगा, F वो व्हाइट डिस्प्ले कर देगा। अब इस तरह से आप कलर की इंटेंसिटी बता सकते हैं। तो हमने देखा कि 3 तरीके हैं कलर स्पेसिफाई करने के। फर्स्ट है या तो आप कलर नेम दे दें सिंपली, या आप RGB वैल्यू दे दें जो कि 0 से 255 के दरमियान उसकी रेंज है। और थर्ड क्या है, हेक्साडेसिमल कोड। तो हेक्साडेसिमल मतलब आपका 6 डिजिट कोड होता है। तो अब उसमें क्या है कि आप हैशटैग पहले देते हैं और उसके बाद आप RR, GG और BB 6 वैल्यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं वही रेड आपकी, सेकंड 2 वैल्यूज़ हैं आपका ग्रीन और थर्ड जो है आपके वो है ब्लू। अब इसमें क्या है, हेक्साडेसिमल इंटीजर होते हैं बिटवीन 0 to 9 और A to F। अब इस तरह से आप कलर की इंटेंसिटी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं चाहती हूँ रेड कलर डिस्प्ले करना, तो मैं क्या करूँगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं वो रेड रिप्रेजेंट करती हैं, तो उन दोनों को मैंने F कर दिया यानी कि हाईएस्ट, और बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं उनको 0 0 कर दिया। तो बाद वाले 2 रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन और उसके बाद वाले 2 रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू। तो हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को F किया यानी कि हाईएस्ट, तो उसने सिर्फ रेड डिस्प्ले किया। इसी तरह से अगर मैं हेक्स कोड देती हूँ ग्रीन के लिए, तो उसमें भी क्या होगा, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ 0 की, लास्ट 2 वैल्यूज़ 0 की, और जो दरमियान में 2 वैल्यूज़ हैं उनको मैंने हाईएस्ट कर दिया यानी कि F कर दिया, तो वो ग्रीन डिस्प्ले कर देगा। अगर मैंने ब्लू डिस्प्ले करना है तो मैं वही तरीका है कि यहाँ पर आपने हैशटैग दिया और फिर पहली 2 वैल्यू को 0 कर दिया, दूसरी 2 वैल्यू को आपने 0 कर दिया,
और थर्ड जो दोनों हैं उनको आपने क्या किया, उसका मैक्सिमम दे दिया यानी कि F। तो वो डिस्प्ले क्या करेगा, वो ब्लू डिस्प्ले करेगा क्योंकि F उसका हाईएस्ट है, और बाकी जो शुरू के दो थे वो हमने दोनों को 0 सेट कर दिया।